Hello, good morning. How are you? I hope you are fine. Today we are discussing with our next topic of our gravitation. In last class we discussed their gravitation, chapter 10 of ninth class. So today we will discuss some question related to our gravitation chapter, and we will discuss next chapter topic of this one. So yes, in last class beta we discussed their equation of motion with help of the g. Okay, equation of motion, if their g is acting there, g is acceleration due to gravity. If any body is falling downward direction, then g will be positive. Acceleration due to gravity acceleration due to gravity, that is g only. Okay, and इसकी यूनिट क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या रहती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहती है. सो इट्स यूनिट विल बी रिमेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड it is vector quantity only. So as we are taking as object is falling down, then acceleration due to gravity will be positive, and as object is accelerating upward direction, then g will be negative. Okay, and we are following a different object of the different mass, then which one object will be fall down with the same velocity, that it will be remain same velocity. For example, your question is there now. Here, first one question: two objects whose masses are 150 kg and 250 kg falling down toward earth gravity, then find which object will come first. ओके, ये कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है जिनका वेट क्या है 150 केजी और 250 केजी है, तो इनमें से क्या है, कौन सा सबसे पहले आएगा अर्थ की सरफेस पे. ओके, विच वन ऑब्जेक्ट विल बी फॉल डाउन फर्स्ट. So here how we can solve better this one question? We discuss their mass and weight. Mass क्या होता है, their difference we discuss there. Mass is having m only, that it will be remain constant as we are going anywhere on the earth surface. earth surface पे कहीं भी जा रहे तो mass हमेशा क्या रहता है, constant रहता है. As we are going inside the surface also, as well as we are going upper side of the surface also, then mass will be remain constant. Okay, so weight will be changed because of the value of the g. वेट के अंदर क्या होता है, वेरिएशन होती है, बिकॉज वैल्यू ऑफ द जी विल बी चेंज. वेट कैन बी जीरो बिकॉज योर जी कैन बी जीरो. ओके, वेट हमारा कब जीरो हो जाता है, जी जब जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, बट मास तब भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. तो ये अभी ये कह रहा है कि वेट हमारा क्या है 150 केजी सेकंड 250 केजी है, तो इनमें से कौन सा पहले आगे गिरेगा. सो दैट ऑल आर मूविंग विद द जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली. कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम फॉल कर रहे हैं वो सेम एक्सेलरेशन के साथ ही बॉडी एक्सेलरेट करती है. That doesn't depend upon this one mass, because we have done. So as we know
acceleration due to gravity g is equal to gm by r square. M is a mass of the earth and r is a radius of the earth that is not depend upon the mass of the object. Okay, g is not, so g is not depend on mass of the object. ऑब्जेक्ट का मास चाहे कितना भी हो, चाहे 600 kg हो, चाहे 100 kg हो, हमेशा क्या रहेगा, दे विल बिकम टुगेदर. ओके, वेलोसिटी विल बी रिमेन सेम, क्योंकि जी हमारा क्या मास पे डिपेंड नहीं करता. ओके, सो डिपेंड अपॉन द मास एज वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी, each object will remains सारी को टाइम लगेगा, नो, both will be come together on the earth surface. Okay, both will be come with the same velocity, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ ही नीचे आएंगे, दोनों एक साथ ही नीचे आएंगे, चाहे कोई हल्का हो चाहे कोई सा भारी हो. So they will be come together with same velocity, will be remain same. So both object will come together on earth surface. That is an important concept, beta. Okay, so this one, any object we are falling with a different masses, then which one will come first, which one will be late, then all object will be come together with each other, because that is g is not depend upon the mass of the object, this one is a depend upon the mass of the earth. Okay, and radius of the earth, इन पे डिपेंड करता है g की वैल्यू, अब उसकी एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है, ना मास पे डिपेंड करती है, ना वेलोसिटी पे डिपेंड करती है. दैट्स व्हाई वेलोसिटी ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस देयर इक्वेशन ऑफ मोशन ओनली. सो इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल डिस्कस देयर बेटा. इक्वेशन ऑफ मोशन इन फॉर्म ऑफ द ग्रेविटी है, under the effect of the gravity we can write there a equal to our g. Any body is accelerating up and down, then a will be converted into g. So here equation of motion we can write there v equal to u plus gt, and there s equal to ut plus gt square plus half v square minus u square equal to 2gs. Okay, these are the equation of motion due to under the effect of the gravity, due to acceleration due to gravity, due to acceleration gravity. क्योंकि ग्रेविटी, जब कोई भी बॉडी क्या है, दिस वन बॉडी इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इन दैट केस दैट ए विल बी कन्वर्ट इनटू जी. When any body is we are falling in upward direction, then a will be equal to minus g. Clear? So how we can solve this one? Here how we can apply? Now we will see some question related to this one. Let an object falling down from 30-meter height, from 30-meter height, then with velocity of 15 meter per second. Okay, 5 meter we can take 5 meter per second. Then find final velocity of this object as it will reach on ground. Okay,
तो क्वेश्चन है इसके अंदर कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 30 मीटर की हाइट से क्या कर रहे हैं, हम उसको फॉल कर रहे हैं, दैट इज एक्सेलरेटिंग इनिशियली इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, देन वी हैव टू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी, व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी, देन इट विल रीच ऑन द ग्राउंड, कि ग्राउंड में पहुंचने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी. सो एज वी आर थ्रोइंग एनी ऑब्जेक्ट, लेट दिस वन ऑब्जेक्ट वी आर टेकिंग throwing in downward direction, this one object is coming in downward direction, its height we are following it from here to there, that distance is given our 30 meter, क्या given है 30 meter given है. So this is coming down, then A will be converted into G. कोई भी object बेटा अगर I am leaving this one then it will fall down only, but I am not applying any external force. This is coming down due to the gravitational force of the earth. Okay, that earth is attracting every, it is coming down only, and due to this one A will be equal to our G. Okay, so this one our 30 meter height with a velocity of 5 meter per second. This is a moving initially with velocity u equal to your 5 meter per second. Then find the velocity of the object. Velocity निकालनी object की कि finally क्या velocity हो जाएगी as it will reach on this one. So as given terms in our question, then we will write there initially given height of this one object. Height means s. Displacement is given our 3 meter. उसके बाद करें initial velocity you can write there 5 meter per second. If its terms are not given in SI unit, then first convert into SI unit. So after that here we have to find out final velocity. So this one you are falling down, that's why A will be equal to our G only. So here which one equation we can use? See it. First equation V equal to U plus AT. Second equation S equal to UT plus half GT square. Third, V square minus U square equal to 2S. If you can't understood beta, first write all three equations, then check there which equation we can use there to find their final velocity. So see here, first in equation V equal to U plus GT. So we have to find out U is given, G we can take there 9.8 meter per second square. Okay, we discussed already in last class beta. G we can write there 9.8 meter per second square for our earth surface. And T is time, but time is not given in our question, that's why we can't use this one equation. S equal to UT plus half GT square, again this one also we can't use because here S is given, U given, but we have to find out final velocity, time already not given. So इसके अंदर V ही नहीं है, so no need to use this one. Third equation we can use here. So by using third equation we can write here, by using third equation of motion, here we can write there V square minus U square equal to 2AS, and A we can write equal to G, that's why we can write there 2GS. So V we can write there V square equal to, this one we will take U square plus 2GS, and G will be equal to positive. Why positive? Because object is coming down. जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो जी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे. सो एज वी विल पुट हेयर वैल्यू, देन वी कैन राइट देयर, पुटिंग वैल्यू हेयर V square equal to U square equal to your 5, then square of the 5 plus 2. G we can take there 10 if not given, and S will be height we can write there 30. Clear? So here we can write there 25 plus, then it will become your 20 into your 30. So here we can write there 25 plus 600. So it will become your 625 V square. Okay, so as we will take their V square equal to 625 meter per second, then remove this square, then we will take this one this side under root, then we will solve it, then velocity will become out our V equal to our 25 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज अंडर रूट को हम सोल्व करेंगे, इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास 625 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25. सो वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड. जैसे ही हमने इसको ऊपर से 5 मीटर पर सेकेंड के साथ डाला गया तो ग्राउंड में पहुंचते हुए इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो आई होप यू कैन डू बेटर लाइक दिस वन क्वेश्चन. एज वी आर फॉलोइंग एनी बॉल अप एंड डाउन, एनी बॉल वी आर थ्रोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन जी विल बी टेक नेगेटिव. So next beta, next question we will do, let an object here, an object
throwing and it will reach on highest point, then find total time. Okay, so now see here, we have to find out height of the object. कोई एक object है जिसको हम क्या कर रहे हैं, throw कर रहे हैं with this one to the topmost point. Okay, let here we are taking their draw their diagram. How we can draw this one? कि कोई object है, this one our ground surface, इसको क्या है, कोई object है, उसको हमने ऊपर की तरफ throw किया है. Clear? We are throwing object in upward direction. So as initial velocity in our question given 20 meter per second. 20 मीटर पर सेकंड के साथ थ्रो कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहा है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक जा रहा है. इट विल रीच हियर ऑन द टॉप पॉइंट. सो वेलोसिटी आई टोल्ड यू बेटा कि मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद क्या हो जाती है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. सो दिस वन यू आर अंडरस्टूड. सो फाइनल वेलोसिटी वी कैन राइट देयर जीरो. तो कह रहा है कि कितना पाथ कवर करेगा इनिशियल टू फाइनल, यहाँ से यहाँ तक के जाने के बाद ये कितना पाथ कवर करेगा. मीन्स हाइट वी हैव टू फाइंड आउट how much path is covered by this object from here to there. तो ये हमें फाइंड करना. तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट वी आर राइटिंग देयर गिवन फैक्टर्स. क्या क्या गिवन हमारे पास, फर्स्ट योर इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन योर 20 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट योर फाइनल वेलोसिटी बिकम्स योर जीरो. फाइनल वेलोसिटी क्या गिवन है, जीरो गिवन है. नाउ टाइम इज नॉट गिवन, टाइम गिवन ही नहीं है. क्लियर? हाइट भी गिवन नहीं है. Clear? Going in upward direction, that's why A we can write there minus G. ऊपर की तरफ जा रहा है तो A किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के इक्वल हो जाएगा, माइनस G के इक्वल, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन होता है अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके, दैट्स व्हाई देयर माइनस G. सो S हमें फाइंड करना है. S we can write ना H इक्वल टू S ऑल्सो. S फाइंड करने के लिए क्या हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन इक्वल टू S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. या तो यहां से इसको यूज करते हो, टाइम निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, ऐसा आ जाएगा. या फिर डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन पुट कर लेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. v स्क्वायर जीरो, योर you can take their 20 square and a we can write their g, then s we have to find out. या तो डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं, या टाइम अगर आप ये इक्वेशन यूज करना चाह रहे हैं तो इसके लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड u we can write there v final velocity 0, initial velocity our 20 square, and here we can write there 2, and a we can write there minus G, and here s will be equal to height. So as we will take square of this one, then here we can write there 400, then it will be your minus 2G, then your h, and G you can write there minus minus cancel out, then 400 G we can write there 10, then here solid, then here will become 20. So height क्या आ जाएगी हमारे पास 20 meter of this one. This object as we are throwing in upward direction with initial velocity 20 meter per second. तो कितनी maximum height तक पहुंचेगा, it will reach till your 20 meter height तक, जिसपे finally velocity क्या हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी. So I hope you understood better this one, some questions related to our gravitation chapter. In next class we will discuss their pressure and their buoyancy force also. So thank you for watching today our video.